Hello students, welcome to Success Extremo. This is the third lecture on class 11th Organic Chemistry. अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई वुड सजेस्ट दैट आप उन टॉपिक्स को पहले क्लियर कर लें. And if you just want to clear this particular topic, then continue watching as in this video we will not just only cover the topic but also practice the problems. So let's start the lecture. So, इस लेक्चर में we will be discussing about the difference between sigma and the pi bonds. तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का वो ये आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाली होती हैं उनका जो ओवरलैप होता है वो एंड टू एंड होता है. इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं और एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं. वहीं पे मेरा जो पाई बॉन्ड है वो जो फॉर्म होता है वो आपका साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो मेरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो मेरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों. एंड दिस ओवरलैप इज ऑल्सो नोन एज साइडवेज ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप. सेकेंड जो डिफरेंस है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होते हैं. मीन्स जो एक्सिस न्यूक्लियस से पास होती है उसी के अलोंग आपकी ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर. एंड इन पाई बॉन्ड्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द साइडवेज ओवरलैपिंग, उन ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. Now we will be understanding the first 2 points diagrammatically. Here we have example of overlapping of s and s orbital. S orbital की shape हमें पता है symmetrical होती है. तो अगर internuclear axis horizontally pass हो रहा है then we see that overlapping जो हो रही है वो internuclear axis के along आ रहा है. Therefore S and S overlapping forms sigma bonds. Now the second example we have is the overlapping of s orbital with the p orbital. s orbital की जो internuclear axis है horizontal है, p orbital की जो internuclear axis है वो भी horizontal है. And when they overlap, we see that कि जो overlapping हो रही है वो भी horizontal axis के along हो रही है जिसको हम internuclear axis कहेंगे. Since the overlapping is along the internuclear axis, that forms sigma bonds between s and p overlapping. अब हमने s and s orbital की sigma overlapping देख ली है, s and p orbital की sigma overlapping देख ली है. जो थर्ड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं दैट इज p and p की sigma overlapping. जब p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन हो रही है, एक्सियल हो रही है, दैट इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, देन उस टाइम पे p और p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है. अब जो एग्जाम्पल है वो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल ही है, लेकिन अब p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल इज साइडवेज ओवरलैपिंग. Now this black line that I am showing is the axis of the orbital. It is not the internuclear axis but it is the axis of the orbital. अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग हो रही है अपर एंड लोअर पोर्शन में. दैट मीन्स द ओवरलैपिंग इज टेकिंग above and below the internuclear axis and the axis of the orbital is parallel to each other but they are perpendicular to the internuclear axis. और यही पॉइंट हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया था जब हमने पहले पॉइंट्स लिखे थे. सो फॉर पाई बॉन्ड्स वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दैट इज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड p sideways overlapping forms the pi bonding. Further points of difference between sigma and pi bonds are that sigma bonds are stronger than the pi bonds, or we can say that pi bonds जो होते हैं sigma bonds से comparative weaker होते हैं. The reason for this is that कि sigma bonds के अंदर जो overlapping होती है वो ज़्यादा extent तक होती है. Means जितनी ज़्यादा overlapping उतना ज़्यादा आपका stronger bond. Next point of difference is सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स हो सकती है और पाई बॉन्ड्स के अंदर फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स नहीं हो सकती, और यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसकी वजह से एल्कीन्स जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं या सिंगल बॉन्ड्स होते हैं
उनके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं या रोटेशनल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एंड कंपाउंड्स हैविंग द पाई बॉन्ड्स उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सिस या ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं दैट इन सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है that is symmetrical to the line joining the nuclei of the two atoms. That means हमने देखा था कि जो overlapping हो रही थी वो along the internuclear axis हो रही थी, लेकिन जो pi bonds होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो above and below the plane होता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा pi bonds होते हैं that provides the most reactive center in the molecules, means the attacking reagent can easily attack the pi bonds. And next point तो सभी को पता है that all the single bonds are sigma bonds and all the pi bonds are present in the multiple bonds, that is in double bond or the triple bonds. Now we discuss the type of the questions that are being asked on this particular topic. Hybridization of the carbon means आपसे पूछा जाएगा कि given compound के अंदर carbon की क्या hybridization है, sp3 है, sp2 है या sp है. The second type of question is on the shape and the bond angle of the compound. अगर आपको hybridization पता है तो then you can easily guess the shape and the bond angle. And if you are not aware of that, then you can go and check out the previous lecture. And the last type of question that can be asked is the number of sigma and the pi bonds present in the given molecules. Now, before doing the questions, just for the revision, we should remember that कि single bonds के अंदर sigma bonds होते हैं, hybridization उसकी sp3 होती है, shape या geometry उसकी tetrahedral and bond angle is 109.5 degrees होता है. और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. हाइब्रिडाइजेशन वी नो दैट की sp2 होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है एंड 120 बॉन्ड एंगल होता है. ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं. हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, शेप लीनियर होती है एंड द बॉन्ड एंगल इज 180. सो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, अगर कंपाउंड के अंदर कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की sp3 होगी, जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगे होंगे उसकी sp2 होगी, और जिस कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे उसकी sp होगी. बट कई बार क्या होता है, दिस डज नॉट सर्व द पर्पस. सो उसके लिए एक बेटर शॉर्ट ट्रिक है विच स्टेट्स दैट इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अनदर 4 एटम्स देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अगर गिवन कार्बन 3 एटम से ज्वाइन है तो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. इफ गिवन कार्बन एटम इज ज्वाइन टू अनदर 2 एटम देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. So let's start with the first question, that how many sigma and pi bonds are present in the given compound. So we can see that कि there is one double bond, single bond and triple bond. हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा तो लिखना ही है. सो दीज आर ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स, बट ये तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके कार्बन और कार्बन के बीच में, but there are sigma bonds between carbon and hydrogen also. So for considering that, we need to form structural formula of the compound. All the bonds marked with the white color are sigma bonds. So sigma carbon carbon bonds are 4, sigma carbon and hydrogen bonds are 6, and all the remaining that are marked with green and blue color are pi bonds. So in total there are 10 sigma bonds and 3 pi bonds. So अब next question में हम सबसे पहले structural formula ही बना लेते हैं like this. So we can see that all the white bonds, that is carbon and hydrogen sigma bonds, are total 6, and all the sigma carbon carbon bonds are 4. Pi bonds के लिए I have marked with the red color, and the total pi bonds are 3. Next question is CH3NO2. We see that carbon is attached to 3 hydrogen and nitrogen. So we make the structural formula, and all the hydrogens are being attached with the sigma bonds or single bonds, and nitrogen with the carbon is also attached to the sigma bond. Nitrogen further is attached to 2 oxygen with sigma bond, and one of the oxygen has pi bond also. So total sigma bonds I have is 6,
and the pi bond between nitrogen and oxygen is 1. Next part we have CH2, Cl2. First we'll make the structural formula. In this we know that carbon is attached to 2 hydrogens and 2 chlorine atoms. We see that all are attached with a single bond. So we have 4 sigma bonds and there are no pi bonds. So the pi bonds are 0. Next type of question is what is the type of hybridization of each carbon in the following. So इसके लिए हमें short trick याद रखनी है और वही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में वी कैन सी दैट कि कार्बन इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, सो कार्बन इज अटैच्ड टू अनदर 4 atoms. So the hybridization of the carbon is sp3. Next we have is CH3 whole twice CO. Firstly, we will make the structural formula. The first carbon which is attached to the oxygen and that particular carbon is also attached to another 2 carbons. So कितने एटम से ज्वाइन है? वो 3 एटम से ज्वाइन है. अगर वो 3 एटम से ज्वाइन है इसका मतलब क्या है? उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. We will see for another carbon. The carbon is attached to 3 hydrogens and 1 carbon. So the total number of atoms it is attached to 4. So the hybridization is sp3 and the same goes for the third carbon which is marked with the red color. So that is also sp3. नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CN. इसके अंदर जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच है और साइनाइड ग्रुप के कार्बन से भी अटैच है. इट इज अटैच विद 4 एटम्स, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. बट वी हैव कार्बन ऑफ साइनाइड आल्सो, सो बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वी कैन सी दैट द कार्बन इज अटैच विद अनदर कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन. सो देयर आर इन टोटल 2 atoms, so the hybridization for cyanide carbon is sp. Now we have fourth example HCONH2. We will make the structural formula and we see that the carbon is attached with 3 other atoms, that is hydrogen, oxygen and nitrogen. So the hybridization is sp2. Now we will be doing more questions on the same type, but in this particular question we will also be predicting the shape of the molecule based on the hybridization. First example is H2CO. So firstly we will be finding out the hybridization. The hybridization is sp2. Why? Because the carbon is attached to 3 atoms, and since the hybridization is sp2, so we must remember that it is planar in shape and the bond angle is 120. Next is CH3F. Since it is attached with 4 atoms, the hybridization is sp3 and sp3 has a shape and geometry of tetrahedral and the bond angle is 109.5 degrees. C part is HCN. Carbon is attached to another 2 atoms, hydrogen and nitrogen. Hybridization is sp. The shape is linear and the bond angle is 180. So this was all for today's video. I hope you liked the video and you are thorough with the topic and आपके सारे doubts clear हो गए हों. And if you like the video then do consider liking, sharing and subscribing to the channel. Thank you.